Good morning to all of the students. Today we will discuss about the diabetes. That is also a non-infectious disease. The diabetes, how it happens? Yeah, they are telling. Whatever the hormone insulins are there in our pancreas, they are controlling the sugar level. If the insulin is secreted, means if the insulins are very low, so in this case the glucose cannot be controlled and the diabetes happen here. तो जो मेन इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है. तो अगर इंसुलिन कम हो जाएगा, मीन्स इफ द इंसुलिन इज लो, देन द डायबिटीज हैपेंस. नाउ व्हाट इज द सिम्टम्स दे आर टेलिंग? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, मीन्स नाइट में क्या होता है, बार बार यूरिनेशन होता है. यूरिन बार बार हो गया मतलब पेशाब. वी आर टेलिंग द यूरिन हैड बी मोर एंड मोर एट द नाइट टाइम. इंक्रीज ओबेसिटी, पर्सन एकदम मोटा हो जाएगा इसमें. और वेट लॉस मीन्स वेट एकदम कम हो सकता है इसमें. नाउ रीज़न फॉर डायबिटीज़ क्या हो सकता है? रीजन्स, व्हाट इट माइट बी द रीज़न? दे आर टेलिंग योर हेरिडिटी मीन्स हो सकता है, इट माइट बी इन योर फैमिली. इफ समवन हैज़ एन डायबिटीज़, इट माइट यू कैन ऑल्सो गेट. ओबेसिटी, पर्सन एकदम मोटा हो जाएगा, जैसे मैंने बोला. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, द पर्सन आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज मोर. यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेगा, दिन भर अगर बंदा बैठे ही रहेगा, द पर्सन आर सिटिंग एट वन प्लेस, नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ द वर्क, नॉट वॉकिंग ऑल्सो, then it might the chances of the diabetes. Mental stress, some kind of the tension also there, then also the diabetes causes. So you have to control main thing, the sugar level, the sugar glucose. Every time you have to not eat more and more sugar things, then it might be the diabetes chance will be less to you. हर बार ज़्यादा शुगर की चीज़ नहीं खाते रहने चाहिए, स्पेशली आउटसाइड की. Now heart disease, but before heart disease, just see there. Do you know the given? In India there are 7 crore diabetes patients are there present in the India only, around the world. पूरे वर्ल्ड में 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट तो इंडिया में ही है प्रेजेंटली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट डिजीज़. हार्ट डिजीज़ कब होता है? व्हेन द ब्लड सप्लाई एट लेस, और ब्लड ऑक्सीजन, वी कैन से ऑक्सीजन लेवल आर ऑल्सो लेस टू दी हार्ट, एंड द न्यूट्रिएंट सप्लाई आर वेरी लेस टू दी हार्ट, देन द हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम कैन कॉज. इन दिस द हार्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ये टाइम में क्या होगा, हार्ट वर्क प्रॉपरली नहीं होगा. जब ऑक्सीजन सप्लाई लेस होगी, ब्लड सप्लाई लेस होता है, हाँ, न्यूट्रिएंट सप्लाई लेस होगा, तो हार्ट डिजीज़ की चांसेस ज़्यादा होती है. इसमें पर्सनस को हार्ट अटैक आता है. इन दिस केस द पर्सन आर गेटिंग हार्ट अटैक. द मेन थिंग इन अवर बॉडी इज़ वर्किंग विद द हार्ट ओनली. द हार्ट इज़ प्यूरीफाइंग द ब्लड. हाँ, द हार्ट इज़ प्यूरीफाइंग द ब्लड. जो हार्ट क्या करता है, अपने ब्लड को प्यूरीफाई करता है. इन ईयर, if someone has an heart attack, if the person are getting heart attack, we have to consult doctor immediately. अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो डायरेक्टली अपने को डॉक्टर को कंसल्ट करना है. एंड वी हैव टू ट्रीटमेंट नेसेसरी है चांस में. ऐसा नहीं कि घर पे ही बैठे रहे. इट इज़ नथिंग. मोर ऑफ द टाइम मोस्ट चेस्ट पेन आर देयर, तो देन ऑल्सो इट माइट बी अ चांस ऑफ द हार्ट डिजीजेज ऑल्सो. Now one should not ignore, you have to not ignore when your chest pain are more and more chest pain are there. पेन इन शोल्डर, जो शोल्डर है, हाँ, हाथ का जो शोल्डर होता है, देन ऑल्सो दैट पेन इज ऑल्सो देयर, देन यू हैव टू ऑल्सो कंसल्ट द डॉक्टर. नेक एंड आर्म, नेक बोलते और आर्म्स बोलते, अगर वो भी ज़्यादा पेन हो रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर. क्रैम्प्स इन हैंड्स, बार बार क्रैम्प्स आते रहेंगे. एंड अनजीनेस मीन्स पर्सनस को लाइक है ना, चक्कर आने के चांसेस रहेंगे. एंड द ट्रेमर्स आर देयर इन आवर बॉडी, देन ऑल्सो द हार्ट डिजीज हैपन. Now reason of heart attack, how the heart attack happens? Here the person are doing more smoking, जो बंदे लोग बोलते हैं ना ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, हाँ. then the alcoholisms, drinks, you know very well, beer, all the things. then the diabetes are also the chance of the heart disease. hypertension, ज़्यादा बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है. ओबेसिटी में मैंने बोला, जैसे पर्सन बोलते हैं ना ज़्यादा मोटा हो जाएगा, हाँ. if the person are more fatty, तो in this case whatever the person are not getting proper supply of the oxygen to the heart. Now lack of physical exercise, here we have seen in the diabetes case also. Heredity I told you above. And mental stress से भी ज़्यादा हो सकता है ये. एंगर, अगर पर्सन अक्सर बोलते हैं ना गुस्से में ही रहेगा, देन ऑल्सो द इफेक्ट टू द हार्ट ऑल्सो. एंड एक्सिसिटी, चिड़चिड़ा हो जाता है इसमें. नाउ व्हाट माइट बी द हार्ट डिजीज, हाउ यू हैव टू consult, means how you have to do the treatment of the heart disease. First, bypass surgery are there, then one heart surgery are there, angioplasty are there, heart transplant are there, installation of the stents they are telling, and installation of the pacemakers. ये 6 chances है जिससे
अपनी हार्ट सर्जरी होती है, मीन्स हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट होती है जब हार्ट अटैक होता है तो. The first aid what we have to do, first we have to call to the 180 ambulance, and then we have to shake the shoulder of the persons. जो बोलता है ना, जो बंदे को हार्ट अटैक आया रहता है, तो बंदे को बोलता है ना जो शेक करने का, शोल्डर्स को बार बार शेकिंग करने की उसमें. एंड कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक, पर्सन्स को उल्टा लेटा देने का इन द हॉरिजेंटल पोजिशंस. हॉरिजेंटल पोजिशन, वर्टिकल पोजिशन पे नहीं, उसको पूरा उल्टा करना है. हॉरिजेंटल पोजिशंस ऑन द हार्ट सरफेस. एंड परफॉर्म कॉम्प्रेशन ओनली द सपोर्ट, दैट इज COLS, मीन्स एक तरह का कॉम्प्रेस करना है, मीन्स उसको सहलाना है. एंड इन दिस प्रेस वी कैन से द सेंटर ऑफ थॉरेक्स, जो सेंटर बोलते हैं ना, थॉरेक्स का जो मेन सेंटर रहता है अपना, एटलीस्ट 30 टाइम एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक पर टाइम्स. ये COLS में क्या होता है, 30 टाइम्स. तो बोलते हैं ना बंदे को प्रेस करते रहते हार्ट को बार बार, कुछ लोग यू हैव सीन लॉट ऑफ द प्लेसेस देयर. तो यू हैव टू गिव 100 to 120 strokes per minute. 100 to 120 strokes per minute means it is in the hospital case, but we can do in the home also. We have to give the strokes again and again to the person. Now have you ever seen grandparents taking decoration, discuss about it with them? You have seen the decoctions are there, and you have discussing also, collect these informations. And then you have seen the information about this one. Grandparents are taking the aloe vera, turmeric, ginger, garlic as medicines. You know very well during the cold. We have the when you have cold things. Yeah, when you have a fever also, the few of the persons are doing like this, where they are taking a milk. In that milk they are putting a ginger, and then they are giving on the earlier time. And even still also few of the people are doing the turmeric in the milk. They are drinking aloe vera also, they are using like in a medicine type. Internet by informations, my friend, just they are telling there are different kind of the treatment are there. Ayurveda, that is BMS we are telling. Homeopathic, BOMS. Natural healings are there in your body whenever the cut are there. Allopathy and the Unani medicines, this is also BUMS. Now misuse of medicines. If you are taking more and more medicines, then also your body get certain kind of the affected. अगर तुम लोग बार बार मेडिसिन लेते रहोगे बिना कंसल्ट के डॉक्टर के, तो भी तुम्हारे बॉडीज पे असर होता है उसका. दैट ऑल्सो अफेक्टेड टू योर बॉडी. मीन्स ओवरडोज ऑफ द पेन किलर्स may damage nervous system. Now पेन किलर्स यू नो वेरी वेल, अगर हेड पेन होते रहेगा, लेग पेन होते रहेगा, तो पर्सन आर ऑलवेज टेकिंग certain kind of the diseases, certain kind of the medicines without consulting the doctors. Now antibiotic may lead to nausea. Already I told you, the person feel like vomiting, but vomit will not happen. Stomach ache are also there. Dysentery, loose motion type, rash are there. The person are getting rashes on the body and white patches. पर्सन की बॉडी पे वाइट पैचेस आते रहेंगे. हाँ, वाइट पैचेस ऑन द टंग. हाँ, टंग पे भी हो सकता है और कहाँ बॉडी पे भी आ जाएगा. ना एंटीबायोटिक, इफ़ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज़ द which kind of the medicines are antibiotic, so you can easily identify. Just see the tablet backside, and if the red lining are there, that medicines are antibiotic. You will see in any medicines, most of the medicines you will see a red lining are there on the like an horizontal type. They are indicating on the back side of the price whenever they written a price, and they are rating the drugs type, something 500 ml of the paracetamol, something whatever is there, insulins, so different kind of the medicines are there, they are written there. So they are making a red line on the back side of the medicines. If the red line are there, that is antibiotic medicines are there. Now poor people do not afford the costly medicines. You know very well, some of the medicines are very costly, they cannot afford. Is there any alternative? उसके लिए और कोई chances है? Which one? So what can we do? So there are generic medicines. Generic medicines are very low cost price. जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, एकदम सस्ती होती है. द पर्सन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द हायर कॉस्ट मेडिसिन्स, तो दे कैन यूज द जेनेरिक मेडिसिन्स. देयर प्राइस आर वेरी लो, एंड द पैटर्न आर ऑल्सो द सेम वन. दे आर टेलिंग दिस आर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पैटर्न. बोलते हैं ना, बिना किसी पैटर्न के उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड दिस मेडिसिन्स आर एट क्वालिटी ऑल्सो, द ब्रांडेड मेडिसिन्स आर ऑल्सो देयर.
हाँ, ये ब्रांडेड मेडिसिन रहती है और क्वालिटी भी रहती है इसमें. Now production cost of these medicines they are telling as a very very low and poor people can easily afford, and their formula is also the same one. And their formula is also the same one, the generic medicines. You have observed some of the time when you are buying some kind of the medicines, there are 3 or 4 types the same medicine are there, and they have the different prices also. This we are telling as a generic medicines. Few of the price are very less the same medicines, and few of the price of the same medicines are very costly. Now use of ICT, mobile app, now you can easily obtain the generic medicine. Use a mobile app like Health Card and Jan Samadhan. Download those app and you will get wherever you are getting the generic medicines. Lifestyle and necessary. Some of the time the people lifestyle also affected to the health also. You know very well when you are waking very very late and sleeping also very late, that also affect your lifestyle, and that also affect the diseases of your body. Frequent changes in meal time. Some of the time you are waking up very very late on morning time, and you are taking the breakfast at 12 o'clock and 1 o'clock, and you are taking the dinner, or we can say the lunch at 4 or 5 o'clock, and the dinner at night you have seen you are taking at 11 or 12 o'clock or 1 or 2 o'clock. That also affect your health. From that also you are getting the diseases. And frequent changes in meal timing they are telling. Lack of physical exercise. If the person are sleeping every time in the home only, the physical exercise very less in these conditions. Consumption of the junk food very well, pizza, vada pav, all these things, these are the junk food of the outside, etc. have been increased. तो इससे क्या होता है, अपनी लाइफस्टाइल पूरी अफेक्टेड होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द पीपल्स आर गेटिंग सिक एवरी टाइम. फ्रिक्वेंटली बोलते हैं ना, जल्दी लोग बीमार ज़्यादा पड़ जाते हैं अगर पर्सनस की बोलते हैं ना सोने का टाइम, खाने का टाइम प्रॉपर नहीं है तो. ये फ्रिक्वेंटली ऑफ सिक बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड. बोलते हैं ना, अगर बंदा बोलते हैं ना बार बार क्या होता है, सिक होते रहता है. पीपल शुड फॉलो द राइट लाइफ स्टाइल्स. वी हैव सीन लॉट ऑफ द टाइम व्हेनेवर द क्लाइमेट आर चेंज, the peoples are always getting ill. What they have to do, they have to change the lifestyle. They have to change their lifestyle, means they have to change the food time, whatever the sleeping time, and the different things in their day-to-day routine life. Physical exercise is also necessary. In this, the people have to do yogasana and pranayam as a physical exercise. Pranayam, they are telling pranayam and the yogasana should be performed under the expert supervision. Some kind of the supervisions are there. From that under the supervision you have to do pranayam and the yogasana. They will see. Otherwise you have to see the video of these things. Do you know government of India, they started Pradhan Mantri Jan Anosandhini Yojana. In this you are getting the generic medicines. That is 1st July 2015. They started this kind of the generic medicines under Jan Anosandhini stores. In the lot of the places in Jogeshwari, Andheri, Goregaon, in different places, you will see the generic medicines. Indian consumption expert, they are telling on large scale, whatever the 80% of medicines are generic. They are telling 80% of the medicines are generic.